and we are recording. So hi guys, हमारे साथ आज स्मृति सिंह है. She's a trained counselor and we are going to talk about a lot of things including mental health and see where we go. क्यों शाश्वत? बिल्कुल। तो मेरा एक स्टार्टिंग का सवाल है भाई, काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या रहता है? Hi everyone. So, counseling, counselor and psychologist में ऐसा कुछ difference नहीं है. But so there's like clinical psychologists. वो लोग those are specially हम लोग उनको psychologists बोलते हैं. Since I don't have my master's degree yet, so I go as a counselor, not as a counseling psychologist because I cannot diagnose या फिर I cannot take up cases which are diagnosed या जो genuine disorders से deal कर रहे हैं. सो ये एक थोड़ा-सा डिफरेंस रहता है, वरना आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑल्सो इसमें। बट बेसिकली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इज़ समवन जिसके पास मास्टर्स की डिग्री है एंड अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज़ समवन हू हैज़ एन एमफिल डिग्री। बस दैट्स द डिफरेंस। ओह, गॉट इट। काफ़ी वेल डिफाइंड है. I did not expect that. सही सही. So स्मृति, तुम elaborate कर सकते हो कि what got you interested into this particular subject, how you got into it? देयर इज़ नो स्पेसिफिक थिंग दैट कि मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ना था, सो आई गॉट इंटरेस्टेड। इट वाज़ जस्ट दैट आई वांटेड टू हेल्प पीपल, आई वांटेड टू वर्क फॉर द पीपल एंड आई हैड साइकोलॉजी इन like 11th and 12th. So I think that is where I thought that, this is one subject I could study and, understand, and which would be a very good and a different way to help people because psychology as a branch is not very well defined in our society. Abhi tak bhi. I thought I could do something different and something good out of it. So yeah, I think that is what got me here. So studying psychology, you got interested into it. You मेरे को जो सुनाई पड़ा, basically what I'm हाँ, understanding is कि when you studied the subject, you were like, okay, this is a direct path to help hmm, people directly, and that is kind of your main motivation. yeah, yeah. That's pretty good. सही है काफ़ी. Mm. So what? You sound like a decent human being. Thanks, Shashwat. Quite that species is quite rare आजकल. Maybe she's just playing us all ऐसा into believing she's a good Yeah, person. maybe उसे psychology इसीलिए इतनी पढ़ा है. साइकोलॉजी She's मुझे भी आती है। like Maybe it's a psychological trick. You'll never know. yeah, she's like मैंने psychology पढ़ी है, so now I know how to behave, and it's like Yes. covering up super. Do you do that, like put up a personality at times just for Um, convenience or for fun? no, I never had to abhi tak, so I don't do it yet. Maybe I will someday. You'll never know. You will know, but yeah, you never know. But putting up a personality is a very interesting question because सबके, everybody's personality is like a little bit of clay, right? वो Yeah, जिन groups में बैठते हैं, they kind of imbibe a little bit of surrounding people's characteristics. थोड़ा बहुत change होता है सबका, right? Like, do हाँ, you think that true. is what do you, मतलब why is that? Is that something that is like inbuilt, hardwired, या फिर? It's not inbuilt. So, what है ना, I don't know if you guys have heard of the nature versus nurture controversy. So, some things are Yeah. inbuilt in you, some things you gain from the environment you are in. So जैसे दोस्तों के साथ ना क्या होता है कि if you're sitting with someone you tend to take their personality because you want to fit in and you want to be with them and you also sometimes you learn new things कि oh this is something I like or this is something I can get interested in. तो वो भी changes आते हैं because you're always growing as a person और आप जब grow करते हो तो आप usually अकेले या किसी के साथ करते हो. तो when you're growing with someone you can take up their a part of their personality or you can mold your personality. So I think that is one thing where you can say कि हाँ थोड़ी personality clay की तरह change हो सकती है थोड़ी बहुत. Because there are certainly some conversations जो कि I will never do in a couple of friend circles, but they are like good friends. ऐसा नहीं है कि they are like bad friends or something, but there are हाँ, some conversations which I'm comfortable in doing everywhere. so I think this is one of the reason कि आप you see the environment you are in, you see the people you are in, you connect with people in different ways. That's very interesting, very very interesting. Mm, So yeah. what do you think are the greatest challenges that you personally have faced while studying the subject of psychology and the issue of mental health?
There are a lot, but one of the main problems, क्या कहते हैं, एक तो awareness नहीं है. Even when I got into the field, I did not know a lot of things. For me also, depression was a hoax because वही सुना है बचपन से कि depression, anxiety क्या होती है. So I think awareness has always been a problem. Even with clients I have had, awareness has always been a problem. क्योंकि आप जब जानते ही हो किसी चीज़ को, जिस किसी चीज़ को समझते ही नहीं हो, so how will you be able to accept it कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है या मेरे साथ ऐसा हो सकता है. So I think awareness has been one of the greatest challenges I have faced. Even sitting with people and telling them कि what I do and explaining them things, किसी को समझाना कि कोई चीज़, डिप्रेशन क्या होता है, एंग्जायटी क्या होता है, कोई भी डिसऑर्डर क्या होता है. सो आई थिंक दैट इज़ आल्सो समथिंग वेरी प्रॉब्लमैटिक एंड वेरी डिफिकल्ट एंड आल्सो, बट इट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कि व्हेन यू आर सिटिंग इन विद सम पीपल जिनको ये चीज़ें नहीं पता है, धीरे-धीरे उनको समझाना. सो आई थिंक दिस हैज़ बीन अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी. Yeah. बाकी हाँ, हाँ हाँ, go ahead. हाँ, बाकी का आई डोंट थिंक आई हैव हैड उससे ज़्यादा कुछ. दिस हैज़ बीन द मेजर इश्यू लाइक थ्रूआउट. आई एम स्टिल आई वी स्टिल फेस इट. इवन पीपल हू आर इन द फील्ड, हू आर वर्किंग विद अस, हू आर स्टडीइंग विद अस, उनको भी कहीं न कहीं वो बायसेस, वो प्रेजुडिस या फिर वो यू नो थॉट आइडियाज़ हैं जो शायद अभी तक क्लियर नहीं हो रहे हैं या हो नहीं पा रहे हैं या करना नहीं चाह रहे. सो ये सब भी घूम फिर के इसी के अराउंड, मेरे लिए तो इसी के अराउंड प्रॉब्लम्स आ रही है. हाँ, that's awareness is certainly I think बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू ट्रीट बिकॉज लाइक मतलब मेरे को खुद भी, इवन दो मेरे को एंग्जाइटी थी पहले, स्कूल के टाइम से हुँ, ही थी, बट मेरे को पता नहीं था कि वो एंग्जाइटी है, राइट. आई वाज जस्ट लाइक कि हाँ हाँ. मतलब ठीक है कुछ हो रहा है, लाइक हाँ पसीना ज़्यादा आता है मेरे को मे बी और समथिंग. हुँ, हुँ, And हुँ, college में I faced some issues, then eventually things it like मतलब I had to talk to a counselor for this. And तब हुँ, मेरे को धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आया, ओके लाइक उस टाइम जो हुआ था that was panic maybe, right. हुँ, तो like even as a person who might have faced some of these issues, we still don't know about them, हुँ, right. या, हुँ. So what do you आई think? थिंक Right, go ahead. हाँ, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो ना, क्योंकि बचपन से भी हम लोग को सिखाया गया ना कि ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं. सो इफ यू आर पैनिकिंग और इफ अगर इफ यू आर नर्वस, तो पीपल विल जस्ट से कि अरे कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, है Hmm. ना? तो इट डज़न्ट गो अवे, बट आवर ब्रेन, हमारा कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि इट इज़ सपोज्ड टू गो अवे बट इट्स नॉट गोइंग अवे. सो हम लोग अपने दिमाग को समझा लेते हैं कि नहीं, 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 कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन. Hmm. So that is how we are raised. How that is how we have been taught कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है या ये चीज़ कुछ नहीं होती. Hmm. So हाँ, उस समय तो I think none of us would have known कि even if you go up to someone and say of our age कि भाई वैसे ऐसे हो रहा है, तो वो भी नहीं समझेगा कि भाई क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं होता. ऐसा कुछ नहीं होता, भाई तो टेंशन मत ले. तो ये चीज़ तो है कि हाँ, नहीं समझ में आता. तो कुछ दैट्स ऐसा. एक्चुअली हाँ. काफ़ी इंटरेस्टिंग. लाइक इन जनरली हर चीज़ के बारे में द गो टू रिस्पॉन्स एज किड्स वी हैव हर्ड इज कि डोंट थिंक अबाउट इट, या ऐसा हाँ, ट्राई हाँ, टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ. जैसे अगर हम लोग रोते भी हैं तो हाँ. इट्स ऑलवेज कि अरे रोना बंद करो, रोना बंद करो. इट्स बट Exactly. मतलब crying is actually catharsis, and It it it, is. it is very essential for Hmm. people who need to emote the way they're Hmm. feeling. Exactly. ऑल इज वेल ब्रो, क्या कर रहे हो? हाँ, तो मतलब काफ़ी बहुत बेसिक चीज़ है जो बचपन से बताई जाती है, और फिर इन अ वे आई थिंक इट प्लेज आउट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स कि वो हम लोग को और विद टाइम इमोट करने से इनहिबिट करता रहता है, एंड हाँ, एक्नॉलेज एग्जैक्टली. करने से कि देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज हम्म. पीपल जस्ट से कि गेट ओवर इट, राइट. हाँ, एग्जैक्टली. बिकॉज बचपन से भी तो सिखाया जाता है दैट योर प्रॉब्लम इज नॉट बिगर, पीपल हैव बिगर इश्यूज. या Yeah, people are going through worse, but that's not the thing. The thing is that what you are feeling is completely okay and it's completely valid and it's completely fine. मतलब if you think that my trauma or my hurt is big enough, then it's big enough. फिर वो comparison नहीं होना चाहिए, but वो होता है कि भाई सामने वाले का दुख तुमसे बड़ा है, वो फेल हो गया है, तुम्हारे तब भी सिर्फ 50% आए हैं, तो वो ज्यादा दुखी है, वो वाली बात हो जाती है. आई So it's थिंक not उसको like that. उसको बोलने का भी एक तरीका होता है, राइट. लाइक इवन इफ यू आर हाँ. ट्राइंग टू पुट इट इन अ पॉजिटिव वे कि ओके लाइक समबडी एल्स हैज अ बिगर इशू, यू नो लाइक हम्म.
आई थिंक उसको बोलने का भी एक तरीका होता है ऑब्वियसली, लाइक हर बंदे के लिए या हर पर्सन के लिए इट्स गोना बी डिफरेंट। लाइक कुछ लोगों को एग्जैक्टली। यू कैन जस्ट मोटिवेट कि हाँ देखो, लाइक यू नो, like XY person को इतना issue था, they still got down to studying हाँ। and they still got the grades, right? हम्म। And sometimes it is motivating for them, sometimes the people feel uncomfortable with it. So हम्म। to put it in a positive way is also, it's basically knowing how to tell communicate these to people who are suffering from mental health हम्म। problems is also a big thing. Also, timing is also a big thing, you know. Timing, how? So जैसे if I like अगर मेरे साथ recently कुछ हुआ है, ठीक है, and I've been like venting about it, crying about it, so I don't think that is the right time to tell the person, even if you're saying it in a good way or a positive way. उस समय you have to let the person be, let the person feel, and let the person say कि ठीक है, you know, whatever you're feeling is okay. And if you're feeling sad about a certain thing, it's it's your emotions, उसमें कुछ गलत नहीं है. Right. Once the person is done venting, once the person has gone out of it and is now in a rational mind frame after they have completely felt the emotion and done with it, that is when you can थोड़ा तो that is when the person will also start thinking rationally ना, वो बोलेगा भी चीजें जो थोड़ा rational होगी. That is when you can say हाँ, now you can look at it like this. Because when the person is already going through something and then you're saying अरे भाई लेकिन सिल्वर लाइनिंग तो है इसमें, ये देखो ये अच्छा ही तो होगा, नहीं होता ना, वो चीज नहीं होती है. मतलब they are So not timing. ready for the solution just yet. They are still Exactly. processing it. Because that is the time when the person has to feel what they're going through. That is the time to be with them, their emotions, and let the emotions flow. उस समय नहीं बोलना चाहिए. Timing is also very important. New things to learn. Yeah. Say. Hmm. So what if somebody feels the emotion, a sad emotion, let's say, but Hmm. they feel it so deeply that they are not able to feel okay with it after a significant amount of time also. Like it is a very common thing, right? Like Yeah. kabhi people uh, get sad over things which are not in their control also, right? Hmm. And Yeah. they are not able to, um, I want to put this very very delicately, but Yeah. they are not able to um, be ready for a solution or be ready to Hmm. try something uh, Yeah. after a very long period of time also. So Hmm. what do you think is the way to go with them? Like how like I don't I don't know, like what is your thoughts about it? I okay. So वही I have the same thoughts about it because मतलब हाँ, उस टाइम पे इट इज इम्पोर्टेंट कि पहले तो ऑब्वियसली द पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग, ठीक है. Right. बहुत बार होता है दे नॉट रेडी. बट आई फील सी आई डोंट नो, मतलब एज अ पर्सन आई हैव नॉट मेट एनीवन हु इज नॉट रेडी फॉर अ सॉल्यूशन, बट मोस्टली वंस द पर्सन, बिकॉज अगर उसको अनडिवाइडेड अटेंशन किसी की मिल रही है ना, या उसको वैलिडेशन मिल रहा है कि वॉट एवर आई एम फीलिंग इज ओके, बिकॉज बहुत बार होता है आर इमोशंस डोंट गेट अ वैलिडेशन. एंड दिस इज वेरी वेरी कॉमन दैट बहुत बार यूल सी कि जिसको सोल्यूशन नहीं चाहिए ना, वो इंसान ऐसा है जिसको कभी वैलिडेट ही नहीं किया गया है कि आपके इमोशन सही है. तो अब उसको ये है कि आई भाई मेरे इमोशंस तो सही नहीं है ना, तो इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो अब फिर आई विल बी इन दिस लूप ओनली. बट व्हेन Okay. यू वैलिडेट समवन ना कि नहीं, योर इमोशंस आर ओके, वो उसको बार बार आपको वैलिडेट करना पड़ेगा कि हाँ नहीं जो भी है सही है, सही है. तो द पर्सन विल इवेंचुअली कम टू अ प्लेस वेयर दे विल हैव दिस रैशनल थिंकिंग, क्योंकि नाउ दे नो दैट व्हाटएवर आई एम फीलिंग इज वैलिड, तो देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन फॉर इट. Or if there is not a solution, then there has to be an alternative for it, right? Right. So it is like mostly हम लोग कभी कब वैलिडेट किया जाता है यार, जब भी बचपन में मार खा के भी रो तो भी बोला जाता है रोना नहीं वरना और मारेंगे. सो मतलब शाश्वत हाँ, ट्रिगर हो गया. अरे भाई 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 भाई, नहीं नहीं, माय पेरेंट्स बेस्ट पेरेंट्स, ऑल इंडिया नंबर वन, हम ये नहीं कह रहे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको मारा. माय फैमिली, माय एनवायरनमेंट नंबर वन एनवायरनमेंट. Okay. हाँ, तो हाँ तो validation is a big part of processing the या emotion. हाँ. बाकी if there's a continuous loop, then you can seek help, always you can seek help, मतलब if you have not been seeking help इतने टाइम से.
मतलब हाँ ठीक है उसके साथ बी विद द पर्सन लेट देम नो कि यू आर देयर फॉर देम एंड यू आर ओके यू आर लाइक यू आर नॉट जजिंग देम फॉर जजिंग भी नहीं मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर Right. गोइंग व्हाट दे आर सेइंग यू नो कि वो लोग सही बोल रहे हैं यू नो दैट वो लोग जो फील कर रहे हैं कि वो सही फील कर रहे हैं सो वैलिडेशन मिल जाता है कि लगता है कि हाँ भाई आई एम नॉट रॉन्ग आई एम राइट वैसी वाली Hmm. बात So, like when you're in a counseling session, I mean, हम्म I'm just assuming you're also a normal person like us who has, of हम्म course, had some years of education and training. हम्म But या deep down, हम लोग की wiring तो बचपन से ही हो गई होती है in our हाँ basic of emotions and हम्म instincts and reactions. हम्म So like like of course we meet a lot of people जो जब बोलना शुरू करते हैं हम्म ऐसा इरिटेट हो जाते हैं हम लोग and we can't हाँ stand them. या As counselors, as psychologists, how does one deal with a potential client or anyone coming to them for help? And हम्म like of course there might be times I feel जब उनको भी इरिटेशन होता होगा कि हाँ मतलब हाँ okay I know professionally your issues are valid but I just हम्म, can't listen to you हाँ for another minute. Does that happen? Like and so how do you tackle this if it happens and how is it dealt with? Because it's a it very happens basic human emotion. हाँ it happens but that is where your training comes in okay because एक साल हम लोग को सिखाया गया है so when I have like जब हम लोग एक साल काउंसलिंग का कोर्स किया so we have learned to actively listen to a person and keeping our biases aside because जब this is why I say ना कि I have always said this कि even if you have a master's degree, but if you want to go into counseling, you should have a 1 year training. Take up a course and do that 1 year training. का उसमें क्या होता है ना you listen actively to the peer जो भी आपके peer counselors होते हैं, peer clients होते हैं, जो भी आपके clients होते हैं. That is what you are taught. वो skill ना हम लोग को लगता है that we are good listeners till we are actually listening to someone. ठीक है? वो चीज़ आपको Hmm. ट्रेनिंग से ही आएगी। अपने प्रोफ़ेशनल और पर्सनल पर्सनैलिटी अपने प्रोफ़ेशनल या पर्सनल बायस को कैसे अलग रख के एक्टिवली सुन के उसको जज नहीं करना है, वो आपको ट्रेनिंग से ही आएगी। वो 2 दिन या 1 हफ्ते का काम नहीं है, वो 6-7 महीने का काम है। बिकॉज़ Hmm. इवन आफ्टर ट्रेनिंग लाइक इवन आफ्टर गोइंग थ्रू द होल प्रोसेस फॉर 6 टू 7 मंथ्स हम लोग के क्लाइंट्स आते थे एंड बिट ऑफ बायस कि भाई ये जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये क्यों बोल रहा है? वो बार-बार उसी लूप में जा रहा है, तो हम लोग के भी दिमाग में आ जाता है कि वी यूज्ड टू गेट इरिटेटेड। सो वो चीज़ इतने ट्रेनिंग के बाद भी वो आ रही है। तो जब ट्रेनिंग नहीं होगी तब तो डेफिनिटली आएगी ना। दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज से कि फॉर काउंसलिंग सेटअप यू ऑलवेज हैव टू हैव दैट 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग वेयर यू आर डूइंग योर सेल्फ वर्क because most of the irritation and those things comes from your you know past things also like past conditioning also Your so already उसको formed भी personality and हाँ preferences. एग्जैक्टली हाँ ऑलरेडी फॉर्म पर्सनैलिटी तो उसको ब्रेक करके अपने पैटर्न्स को ब्रेक करके अपने आप पे वर्क करके अपने बायसेस को ब्रेक करके आप वो सेल्फ वर्क कर रहे हो आप अपने आप को हील कर रहे हो अपने ट्रॉमास को हील कर रहे हो एंड देन यू आर बिकमिंग अ काउंसलर वेयर योर पास्ट इश्यूज डोंट कम अप इन द सेशंस दे विल स्टिल डू सो इन दैट केस एवरी काउंसलर ऑलवेज हैज अ सुपरवाइजर कि अब अगर मेरा आधा घंटा या 1 घंटे का सेशन हुआ है और मेरा दिमाग अब हो चुका है खराब so I will go up to my supervisor and I will take up a session with them. Every therapist has a therapist, every counselor has a counselor. I will go up to them, I will tell them कि ऐसे ऐसे Oh, सेशन है. We not take names, but we'll tell them कि हाँ ये चीजें हुई थी हमारे सेशन में. Hmm. Then they help us to that cope with sounds it. yeah, that's actually I don't think anyone knows about this. This is actually quite makes sense and quite Ah, necessary quite because when you necessary. listen to someone's problems for that Hmm. long and Hmm. like for quite a range, like you'll Yeah, have and the variety a of number of things you will clients. have to, address Hmm. and Yeah, Yeah. you मतलब. carry that baggage in a way. It gets like thoda to just if you even listen to a friend Hmm. or talking about their problems and all, it does make you think about yours as well and about theirs as well. And मतलब Exactly. इतने सारे emotions का some sort of baggage it has to like thoda Hmm. it affect you as well कि this is getting too intense for your Yeah. mental health now. So Hmm. I have It a does. question यहाँ पे like okay so counselors have their own counselors but what Yeah. about the counselors of counselors, do they have their counselors?
Yes, they do. Every counselor has a counselor. Because if they don't, then it's a big red flag for the client. फिर client को सोचना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ है. Because ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी client ऐसी चीज बोले जो काउंसलर को ट्रिगर ना करे. हम लोग के हाँ. पास बैगेज हर इंसान का पास बैगेज बहुत होता है. Hmm. इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. कब आपको क्या ट्रिगर कर जाए किसी को नहीं पता. एंड व्हेन अ क्लाइंट इज कमिंग विद देयर बैगेज और आपका खुद का बैगेज अलग है तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू आर सो सॉर्टेड इन लाइफ कि आपको कोई भाई आपको कोई ट्रिगर ही नहीं हो रहा है, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है. then there's something seriously मतलब that's wrong, that's wrong, basically that's very wrong. So you always need to have someone to go up to and some counselor to go up to and talk about it कि ये चीज ट्रिगर हुआ. बहुत बार ऐसा होता है कि सेशंस में आप फंस जाते हो लाइक एज अ काउंसलर यू गेट स्टक कि यू डोंट नो वेयर टू गो फ्रॉम हियर. उसके लिए भी यू नीड अ सुपरवाइजर नो यू नीड अ काउंसलर कि दिस हैपेंड नाउ आई डोंट नो वेयर टू गो फ्रॉम देयर. And that's like सो professional consultancy, something like that. हाँ 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 हाँ. वेरी इंटरेस्टिंग. सो मैं और मेरी मम्मी उस दिन डिस्कस कर रहे थे. मैं कह रहा था कि थेरेपी इज समथिंग जो कि at this point like it should be included along with like internet and free speech and everything, या. like. And we decided to calculate कि हाँ ठीक है, like okay, अगर यूनिवर्सल फ्री थेरेपी होगी तो कितने थेरेपिस्ट्स चाहिए होंगे, कितने काउंसलर्स चाहिए होंगे हमको अल्टीमेटली. एंड वी डिड some ऐसे hand wavy maths करके we landed भाई at the number to every अग्रवाल फैमिली खतरनाक भाई. we we concluded कि for हाँ every 100 people you need 5 of them to be therapists or counselors at least. हाँ. या ट्रू. So I mean 5 is also very less. You need for 100 you need at least 10. 10 से ज्यादा क्लाइंट कैसे लेगा कोई काउंसलर. ले लेते हैं बट नहीं लेना चाहिए. but नहीं लेना स्टिमुलेटिव चाहिए, होना right? Because चाहिए. that like it comes with the fatigue, right? That's या इट डज. मतलब इट्स नॉट अ वो ऐसे मतलब अगेन इट्स नॉट अ कंपल्शन कि नहीं लेना चाहिए. मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लेना चाहिए. बाकी तो लेते ही हैं तो कुछ हाँ. बाकी अगर कोई बैटमैन है तो अब क्या कर सकते हैं, लाइक. नहीं. सही बात है. सही सही. So social media and mental health is a very 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 big topic to take apart मेरे ख्याल से. यस um, यस. हाँ. मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. मैंने आई थिंक एक महीने पहले इंस्टाग्राम कभी सीरियसली यूज़ नहीं किया था बिकॉज आई वाज लाइक हाँ ठीक है, इट इज़ समथिंग, आई डोंट केयर अबाउट इट अलॉट. बट रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हो गया. आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑन इंस्टाग्राम एंड स्टफ. एंड आई रियलाइज दैट the कोटेशंस कोटेशन पोस्ट्स के नाम पे जो हाँ आता है इंस्टाग्राम पे, दैट इज हाँ. that is some like radioactive levels of toxicity, I would like to say कि. And या it's not like कि मैं उन pages को follow करता हूँ, they are sponsored pages, so या. I don't even have to follow them to participate in their toxicity. And so like what do you think is the right way? I mean, I'm sure like right way is probably not concluded yet, but what do you think we can do to protect ourselves from stuff like that while still having to use a thing like Instagram? I think one of the main things you can do is to know कि whatever you see on social media is not true or is not if you don't resonate with a certain quote कि 10 लोगों ने उसको अपनी स्टोरी पे शेयर किया but you don't resonate with it, so it's okay. वो तुम्हारे लिए सही होना जरूरी नहीं है. You have a huge life out of Instagram or out of social media, and that is your real life. ये तुम आपकी real life में है. So I think that is वो differentiation करना आना चाहिए, which we don't know how to differentiate. हम लोग को आता नहीं है because at present तो किसी को भी नहीं आता है ऐसा लगता है I don't कि think we mostly were नहीं ever आता है. prepared for that kind of thing, like. Exactly. हाँ. But once you are there now, मतलब right now if you see everyone is on social media, at least 95% of the people are using social media. So I think वहाँ पे people should know once you are dealing with it, you should somewhere or the other know कि this is not real life. There's a huge life outside it, and वो चीज़ it's not easy to do that. I'm not saying कि बहुत easy है कि यार यही करना चाहिए. It's very very difficult to do that. And I get it because even for me also it became very difficult to differentiate that people
whatever they're putting up and whatever lives they are showing on Instagram is not true. It looks very perfect. मोटिवेशनल कोट्स बोलने के लिए तो बहुत आसान रहते हैं कि मतलब लग जाओ और निकाल लो, मतलब कर लो कुछ, बट वो होता नहीं है ना, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडरिंग कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, हाँ कि है आपकी ना? सिचुएशन क्या है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली वो एक जनरल स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर आप पढ़ाई में लग जाओगे तो फिर आप लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, पर मेरा शायद इन्वायरमेंट वो चीज सपोर्ट ना करे, या फिर या मेरा पढ़ाई में ही मन नहीं लग रहा है और मुझे हाँ थोड़ी एग्जैक्टली, करना है लाइफ आई एम नॉट इवन में, है बिल्ट ना? फॉर दैट मे बी। एग्जैक्टली, आई एम नॉट बिल्ट फॉर दैट, सो वो सिचुएशन वो इन्वायरमेंट पे बहुत डिफर करता है। सो वही होता है कि अभी वी आर लिविंग इन अ एज ऑफ सोशल मीडिया, वी आर लिविंग अ लाइफ फॉर सोशल मीडिया, अ लॉट ऑफ पीपल आर लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया, everything is has to go on the gram, everything has to look perfect, so वहां पे it becomes very toxic कि हम लोग उसको दो चीजों के बीच में जो एक लाइन है वो छोड़, मतलब वो इतना ब्लर हो गया है कि अब वो दिख ही नहीं रहा है। सो दैट इज व्हाट इट इज, एंड अदर देन दैट पीपल हु पोस्ट इट उनको भी थोड़ा सा तो समझना चाहिए, बिकॉज आई थिंक वेरी दे नॉट क्वालिफाइड, दे जस्ट आर पीपल हु नो अ लॉट और मे बी हु रीड ऐसे सब चीजें, दे आर लाइक आई कैन राइट समथिंग एंड पीपल आर गोइंग टू रेजोनेट विद इट, so whoever is putting up, they also need to be very well केयरफुल अबाउट informed. इट। Exactly, very careful, very well informed, very aware about it कि जो हम लोग लिख रहे हैं क्या ये चीज हमारी ऑडियंस कैसे परसीव कर रही है, वो चीजें होनी चाहिए। सो दोनों तरफ से ही है दैट बट देन उनके ऊपर जब हमारा कंट्रोल नहीं है, सो व्हाट वी कैन डू एज एन ऑडियंस इज try to differentiate, try to take out time for our real life and our Instagram or any social media life as well, because अभी 2 साल में तो आई थिंक इट has grown a lot because of COVID and everything. Everything is online, everything is on social media. Everything you see there, like people are, and you see that people are leading like they are doing what they love and they are happy with it. But जरूरी नहीं है ऐसा हो. People have equally wrecked messed up things sometimes. going on. Yeah, Sorry. they're equally wrecked sometimes. Yeah, Sometimes yeah. I feel कि sometimes people have their one hobby, like their life Hmm. is. I know at least two people actually Hmm. whose lives were not working out. ठीक है, they were facing issues everywhere they went, and then they picked up this one particular hobby. Okay, and then they Huh. started like making videos of it and putting up on one person on YouTube and one person on Instagram, and Hmm. that actually motivated them to fix their other problems, and eventually Yeah. they became a lot happier. So it those kind of examples are also there, but Exactly. to walk that that's a very thin line to walk, and it's a very difficult line to walk. It is. And also we need to know that whoever these the जो लोग content creators हैं and who are doing good in their field, we have to know that it's not easy for them. No, it's not coming easy for them because देख के लगता है कि आप 30 सेकंड का वीडियो ही तो बना रहे हो, क्या ही कर रहे हो. But we also have to know that they are struggling equally. So that वो चीज भी होनी चाहिए ना, और but they are not putting it up ना कि हमारी struggles ये है या वो है. They are putting up content. तो वो चीज भी होता है to know that they are equally vulnerable, they're equally frustrated as we are, but then it's their job, now it's their job because now is what they do, so वो भी एक चीज होता है to understand कि हाँ थोड़ा difference है. And a lot of मोटिवेशनल, एटलीस्ट मेरे को तो एक पर्टिकुलर इंस्टाग्राम अकाउंट पता है, आई एम फेड अप विद Hmm. दैट पर्टिकुलर अकाउंट। उसके टाइटल में नेम ड्रॉप करो ना मोटिवेशन यार। आता है। अरे मेरे को एक्चुअली नाम याद नहीं है बट इट्स लाइक सम पेज, ओके, एंड दे पुट आउट, दे सपोज टू बी पुटिंग आउट मोटिवेशनल कोट्स, राइट? Hmm. और उनके अकाउंट के नाम में वर्ड मोटिवेशन भी आता है, बट हाँ. द फर्स्ट पोस्ट आई सॉ फ्रॉम दैट अकाउंट was a sponsored post, and it said कि if somebody is ignoring you, it's not like they don't have the time, it's like you are not a priority. I'm like, how the fuck is this quote in any universe supposed to be motivating any fucking buddy who reads this? Like, मतलब that is, it's whether that seed of self doubt, right? And somebody who is हाँ. going through something, they will relate to it. That's the problem. It's Yeah, like, yeah, they will. and it, And हाँ. go ahead. नहीं, नहीं, go ahead.
हाँ, and I feel I might be wrong यहाँ पे, but I feel कि once a person who's going through something relates to it, it's like they are kind of digging up their old graves, right? Because their Yes. mind, reading that particular quotation, their mind went back to whatever it is that they're going through, and Yeah. it's not healthy, dude. It's not healthy. It's not because you are already in a doubt, in a dilemma कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. You're already doubting everything in your life at present, and maybe your people are your escape, but अब तो वो भी नहीं है क्योंकि अब तो आप उन पे भी डाउट कर रहे हो कि भाई उनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है. तो एग्जैक्टली हाँ. तो मतलब काफ़ी, मतलब मैंने रिपोर्ट कर दिया था उस अकाउंट को फॉर सम Thanks, Abhishek लेट्स सी. Agarwal. अरे I'm just trying to do good, man. But हाँ. as social media, I feel, but it has a very, like its impact on our psychology, I would say, is quite pervasive because हम लोग देखते हैं भाई लोगों के एकदम, like for example भाई हम लोग पढ़े लॉकडाउन में and मेरी एक फ्रेंड थी भाई यूरोप ट्रिप मार रही थी. मैं बस देख रहा था कोविड के टाइम में, लाइक भाई ये बढ़िया है. एंड मतलब इन जनरल भी बहुत बार वी जस्ट सी पीपल हैविंग अ गुड टाइम एंड वी हाँ. स्टार्ट थिंकिंग कि यार अपनी लाइफ ऐसी नहीं है, एंड वी स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट हाँ. नॉट लिविंग दैट इंस्टाग्राम वर्दी लाइफ. कि यार Exactly. हम भी डालें हैं भाई ऐसा फोटो वोटो हाँ. डालें, मेरी ऐसी फोटोज नहीं आती, या मैं ऐसे पार्टीज में नहीं जा पाता एंड ऑल. बट आई रेड द गुड काइंड ऑफ इंस्टाग्राम कोट अबाउट इट कि डोंट लेट इंस्टाग्राम रश यू, नो वन इज पुटिंग देयर फेलियर्स on social Upon, media. yeah, Yeah. exactly. That's very good. True. So I guess Abhishek, you just need to fix your targeted advertising, man. I think you're just looking for some really screwed up shit, man. Yeah, Because I guess I'm getting Instagram good thinks stuff. that I'm sad. They're like, so I recently like recently तो नहीं, in fact 2 साल हो गए, fuck. But I went, मतलब I felt something similar जब जो मैं लॉकडाउन जस्ट इम्पोज हुआ था, लाइक 5-6 मंथ्स हुए थे. एंड उसके बाद मैं अपने दोस्तों को कॉल करता था, तो जस्ट टू टॉक और जस्ट टू कैच अप और वट एवर, एंड दे वर डूइंग समथिंग विद देयर लाइफ, राइट. Yeah. एंड आई फेल्ट कि यार लॉकडाउन है, मैं घर पे बैठा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. और लाइक मेरा भैया था, ही वॉज प्लानिंग टू गेट मैरिड, ही वॉज प्लानिंग हिज वेडिंग, बुकिंग, लाइक डेकोरेशंस, बहुत कुछ चल रहा था. और उस मोमेंट में आई डोंट थिंक आई वाज रेडी और समथिंग, बट इट जनरली लाइक कुछ एक्टिविटी होती तो मेरे को बुरा लगता था, राइट. बट जब एक्चुअली वेडिंग डे आया, राइट, आई थिंक वेडिंग डे से 2 या 3 दिन पहले भैया भैया किसी पे लैश आउट कर रहा था, बिकॉज वेडिंग स्ट्रेस इज देयर. Yeah. तो आई रियलाइज कि he is also, even though he is like the king because it's his wedding, but that doesn't mean कि he's going through all of it like super happy, and and हाँ. I was able to see कि यार अच्छा, he is also going through something, right. Maybe I should participate and support him, and I did that, and it made me feel You good guys actually. lashed out together, basically, if at that मतलब person. I internally, he externally, but it worked out, let's say. Teamworks make the dream work. Yeah. Yes. I am that person putting up those Instagram quotes. Just But um, it is very important to, when you feel like this, it is very important to take a step back and, see ki, is it really that you're not doing anything with your life, or is it, you're doing something, और कि हमें बस लग रहा है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे because हम लोग घर पे बैठे हैं. grass is always हाँ, greener on the other side. I think personally it was the fact कि I was getting a little bit of jealousy कि यार मतलब सबकी life is हाँ. going forward, हाँ. मेरी life कहीं नहीं हाँ. जा रही है. But हाँ. what what helped me was realizing कि I can participate in other people's happiness without uh, even like अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है, राइट, मेरे भैया की शादी हो रही है, dude, I can still participate हाँ. in that happiness, and be a part of it and party, and do all of those things, and nobody's stopping me, and I did that. So काफी Maybe just sabotage it without anyone finding it. Yeah. I mean, we have our ways, right? Wow. Yes, we do. Coping oh, mechanism, whatever works for one should do, right? But हाँ, मतलब हाँ, you can do this also, and you can also think कि भैया क्या is it
The point is कि are you leading the life you want to live? बस वो वाली बात होती है. If you are not, हाँ तब तो समझ में आता है. If you are, तब भी समझ में आता है why are you feeling that way. But then you can always take a step back and think कि क्या ऐसा सही में मतलब ऐसा है कि बस लग रहा है वो वाली बात. हाँ, आई थिंक वो बहुत स्टेप बैक वाली बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टू जस्ट टू टेक एन ओवरव्यू कि ओके व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली जो कि मेरे को अनकंफर्टेबल करा रहा है, यू नो. Exactly, because this happened with me too. And I was doing my master's degree and I still thought कि मेरी life में कुछ worthwhile नहीं है. And what am I doing with my life? So it took me time to take a step back and realize that I'm doing a degree and I'm post-graduation. Yeah, that too a master's. Technically, you are most qualified पूरे like between the three of us. So yeah, Yeah. so I think, and then also I knew that मतलब I thought सबको देख के I thought कि I'm not doing something good with my life or what have I done अभी तक. But then it took me time and days. I think I spoke to Shashwat also बहुत बार कि यार क्या कर रहा है लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है feel stuck. But then I always used to take a step back and think कि नहीं I have already done what I wanted to do. Like I did my counseling and I'm taking up clients and I'm doing my masters and I think इससे ज़्यादा what do I want in my life right now? So वो एक that is when I learned that it is very important to take a step back and realize कि is it that social media is affecting, is it really affecting our life कि आपको सोचना पड़ रहा है बार-बार कि भई आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो? Just because you are attending course your college online and you're not able to go there often. Yeah, very Like for interesting. me personally, sometimes, I mean, a lot of times actually, I would say कि I'm someone who doesn't particularly knows what he wants to do with his life or anything in general, to be honest. But बहुत बार ये होता है कि even if I do accomplish something that I've really wanted to, बहुत एक्साइटमेंट के साथ और बहुत मेहनत करके या ना भी करके, आई जस्ट रियली वांटेड टू गेट समवेयर और गेट समथिंग, बट व्हेन आई गेट इट आई फील लाइक हाँ मतलब ये तो हो गया, इट्स नॉट दैट बिग अ डील, आई मीन ठीक है अब हो गया. एंड देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा मैंने ये तो कर लिया यार, पर यार उसने तो वो कर लिया. हाँ, एंड मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. एंड वी डोंट रियली टेक टाइम टू सेलिब्रेट द tiny victories or yeah, even sometimes the major ones. because it's a competition. You have to always be the best now. You have to be the Nobody best. You have to remembers rank two, right? That's what we are that told. is exactly that is what we are told कि मेरा फर्स्ट था वरना तो आपको कोई याद नहीं रखेगा. So वो competition है, वो struggle is to be the best in what you are doing. But then why we forget कि हम लोग मतलब कि वो चीज़ नहीं होता ना that you are not sometimes you're not supposed to be the best. Sometimes you're just supposed to do what you are want to do. छोटे-छोटे गोल्स अकम्प्लिश कर लिए ना कि मैंने चलो आज अपना ये असाइनमेंट खत्म कर दी. बट देन हमको स्ट्रेस हो जाता है कि अभी हमें तो 10 और असाइनमेंट करने हैं, बट हम लोग भूल जाते हैं कि अब तो मतलब 11 असाइनमेंट में से 1 तो कर लिया ना, 10 ही तो बचे ना, 11 तो नहीं बचे. तो आई थिंक वो छोटी-छोटी चीज़ें वी फॉरगेट टू सेलिब्रेट, वी फॉरगेट टू अप्रिशिएट आवरसेल्व्स कॉन्स्टेंटली. तो वो मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, मतलब वो मोटिवेशन कम होता जाता है ना. और लेकिन वो स्ट्रगल मतलब वो ऊपर भी पहुँचना है बट मोटिवेशन भी नहीं है. सो बहुत क्लैशेस हो गए हैं हमारे दिमाग में खुद के लिए. And we think like the other person has it better. Like for example, या like Abhishek here is an IITian and we think हाँ मतलब ये तो एक ultra smart बंदा है भाई, इसका IIT में हो गया. हाँ, But हाँ, what probably happens with Abhishek is कि he goes to IIT and he sees यार यहाँ पर तो और भी ज़्यादा smart लोग हैं. हाँ, And मतलब everyone gets intimidated by yeah, someone or the other. There's हाँ, always a bigger shark. exactly. Like even for me, I am intimidated Abhishek से कि he's an IITian. But I forget that I never wanted to pursue engineering. तो मेरे को Yeah, कभी I वो mean, गोल ही I नहीं mean, I था. did, but ठीक है. Okay, sorry Shashwat, but okay. Uh, no, but yeah, that's true. Like, मेरे को आई थिंक मेरे को हमेशा अपने भैया की वजह से कॉम्प्लेक्स था, बिकॉज मेरे भैया हर चीज़ में ओवर अचीवर थे एंड आई यूज्ड टू फील कि अगर भैया कंप्यूटर साइंस कर रहा है, राइट, ही इज़ इनटू दैट एंड ही इज़ डूइंग सम प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग एंड स्टफ. एंड मेरे को एक पॉइंट आया था 12th और ड्रॉप ईयर के अराउंड की मेरे को लगा था कि अगर मैं कोडिंग करूँगा तो आई विल ऑलवेज बी like the second person because he'll be better than me. So let's not do coding. ठीक है? Let's pursue our, let's change our field entirely. Okay. So that was like मतलब हो जाता है कभी कभी, happens sometimes. It's हाँ,
Abhishek, what's your job, by the way? Job profile, job description? Yeah, I'm a software engineer right now, that's true. But बीच के 5 सालों में काफ़ी कुछ हुआ है, I would just like to say that. Yes. Physics is where his heart lies. Physics is my first love. Anyway, let's not get into physics. Um, Yes, please. Smriti, Yes, ऐसा please. It's से भागेगी ना. it's very triggering for me. Please. um, all right, so social media, like young generation is social media, like there's a lot of chatter about social media and mental health, but sometimes we try to talk to somebody who has some experience and who is older than us, and we try to explain कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, and then we hear कि हाँ आजकल के बच्चों को तो इतना प्रॉब्लम होने ही लगा है, like that is something that is pervasive, global, and universal. Key, okay, younger generation is like completely right. Why do you think that is? It's easy. Why do you think that has become a common saying these days? And do you actually believe that is true? Firstly, I don't believe that it's true. Because I believe that yeah, we have our issues and we are a bit, I won't call it up. There are things that we go through and there are certain baggages we have, there are certain traumas we have. But it's not like our previous generation ke paas aisa nahi. They're like they also have their fair share of traumas. It's just that we are very, very, very aware about it. We know that we have a platform to talk about it. We know if I am going, there's always Google ना कि भैया अब कुछ मेरे साथ हो रहा है, then I'll जल्दी से Google it कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्या है, मतलब in general also you will know, जैसे if I am anxious then I can always read about anxiety. Our generation will question a lot also कि अच्छा anxiety है तो क्यों है, क्या है. So वो चीजें, वो सब भी फैक्ट्स हैं कि जिसकी वजह से ओपनली दिखता है कि वी हैव आवर फेयर शेयर ऑफ स्टफ वी आर डीलिंग विद. हमारे प्रीवियस जनरेशन में ऐसा नहीं था, बिकॉज पहली बात तो अवेयरनेस नहीं थी, दूसरी बात एक्सेप्टेंस भी नहीं थी. अभी क्या है, अवेयरनेस तो है, ज्यादा भी कभी कभी अवेयरनेस होती है, बट एक्सेप्टेंस भी है. इफ आई कम अप एंड से दैट आई हैव एंजाइटी, तो 10 में से कम 8 लोग ऐसे होंगे जो मेरी बात को समझेंगे एंड जो अग्री करेंगे कि हाँ मतलब ऐसा हो सकता है, दैट यू नॉट लाइंग. सो वो चीज है दैट नाउ वी आर मोर ओपन अबाउट इट. पहले दे वर नॉट ओपन अबाउट इट, पहले ब्रेकडाउन्स नहीं होता था, बिकॉज अगर उनको बोलो कि आप रो लो बैठ के तो बोलेंगे आईड रादर वर्क. अभी अगर होगा तो वील हैव अ प्रॉपर ब्रेकडाउन एंड देन वील स्टार्ट वर्क. सो वो थोड़ा सा आउट इन दी ओपन वाली बात है कि अब सामने है जो है. बाकी ऐसा नहीं है, आई थिंक एवरीवन इज इक्वली मेस्ड अप, नॉट इक्वली मेस्ड अप, बट एवरीवन हैज देयर फेयर शेयर ऑफ stuff they are going through or they have gone through, or their fair share of stuff which they need to deal with. It's just that we try to deal with it, or maybe not. Our previous generation did not deal with it. They did not try to deal with it. So वो Yeah, बहुत ही this happens a हाँ lot ऐसा कि मतलब हम लोग को हमारी प्रीवियस जनरेशन बोलती है कि लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई से कि आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू विद माय लाइफ और व्हाट आई मतलब मुझे काम के लिए क्या करना है, व्हाट डू आई वांट टू डू फॉर व्हाट डू आई वांट टू डू फॉर अ लिविंग एंड देयर लाइक अरे ये काम कर लो इसमें पैसा बहुत है एंड व्हेन हाँ एनीवन सेज कि पैसा है बट मन नहीं लगता तो लाइक ये आजकल के लोगों को ऐसा हाँ वो होने लग गया, एक बार नोट की गड्डी हाथ में आती है अच्छा लगने लगता है अपने आप सारा हाँ काम और एंड इट गोज फॉर एनीथिंग लाइक फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप्स भी अब थोड़ा ज़्यादा प्रेवलेंट है एंड हाँ लाइक आई हैव हर्ड मेरी फैमिली में काफ़ी लोग सेइंग कि यार ये इतने ज़्यादा लोग अभी इतने जल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं एंड एवरीथिंग, इसीलिए हर कोई इतना डिप्रेस और ऐसा ये सब होने लग गया है विच certainly is a factor somewhere but not in the way it is being implied. या Yeah, हाँ I think it's Awareness की बात is very real because it's not that हमारे like मैं भी यही कहता हूँ कि फिर it's not that आप लोगों के साथ ये problems नहीं थी, it's just that आप लोग ने realize नहीं किया कि actually problem प्रॉब्लम same है, थी, हाँ. different with the time. And I feel कि a lot of things are like being blown out of proportion बहुत ही ज़्यादा, like there is obviously like some factor of it is कि if you are happy then you kind of look at things and you relate to the happiness aspect of it, right? तो you feel कि maybe ठीक है, like maybe sort हो जाएगा, world will probably not end in 2012 or whatever.
And if you are sad, you are going through your own troubles and you're going through your own problems, then it literally feels like, okay, bhai, matlab, everything is on fire, you know. Yeah. And so some aspect is thoda sa internal and projection also, but I feel ki main problem is ki the way it is being portrayed to us is like, okay, war ho gayi, but Hmm. matlab ab kya hoga, you know, like it has that negative sensationalization. Yeah, and like it paints a disproportionately negative picture of the world around us sometimes. Yeah, मतलब, I think there are a lot of things अभी तो to consider when it comes to our, our generation. It's very important to have the right amount of awareness, the right amount of information, and not have extreme. Sometimes we do have extreme opinions as well. तो उसमें भी we have to be very, very, very careful कि it's not wrong having an extreme opinion, but sometimes what I feel is like I don't have an extreme opinion, so maybe I'm wrong, or maybe I'm doing it wrong, or maybe, I'm not as smart as people around me. But it's not true because my opinions are supposed to be that way. It's supposed to be neutral. And I think the key over here is just to maintain a balance between all of this, right? It's Yeah. not, Hmm. I don't think it is particularly conducive to anybody's life to stay 100% off the social media, Hmm. right? Yeah. Hmm. But it's not like social media is your life. You have to find the right balance, right? Yeah. हाँ, it's very important to you know make that line कि ये हमारी लाइफ और ये सोशल मीडिया दोनों ही बहुत ही डिफरेंट है और सोशल मीडिया इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ आवर लाइफ इसको बहुत इंपॉर्टेंट है अलग करना वरना तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। So, Smriti, बीच yeah, में क्वेश्चन पूछता हूँ उसके बाद आई थिंक वी कैन गेट टू right, right. Thank you. हाँ तो you talked about awareness and hyper awareness मतलब in I think in a different context हम्म, uh, but इससे I have a question that came in my mind कि where for people who are studying psychology so you must be I mean ऐसा epiphanies होती होंगी when you're reading about a certain disorder or a particular condition or something like that and you certainly you just go into self analysis कि यार some symptoms तो ऐसा they are common and am I suffering from them too and हाँ, I don't know about it or like uh, just making you more aware of your issues but हम्म, of course you wouldn't know how to fix it right away that's why they हम्म, have such a long course so it's basically college के first year में you've discovered कि okay there are certain things you've realized recently कि they're not okay per se but then you don't हम्म, really know how to fix it immediately and I mean how does that go हाँ सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग बहुत बार कोई शो देख रहे होते हैं एंड वी रियलाइज अरे भाई मतलब सेम ये तो हाँ मेरे साथ भी इट्स समथिंग लाइक दैट it happens a lot वैसे when you read a disorder and you feel यार ये तो हमें भी है या फिर ये तो हमें भी है बट वही बात होती है that you have when you're reading something or when you're studying something you have to understand every point जैसे डिसऑर्डर से देयर आर क्राइटेरिया देन यू हैव टू सी कि ये सारे क्राइटेरियाज मैच कर रहे हैं और इज इट इन माय हेड समटाइम्स आई फील दैट आई एम इनसोम्नियाक बट आई एम नॉट क्योंकि हम दिन में जब 10 घंटा सोएंगे तो फिर रात को नींद कैसे आएगी वो वाली बात होती है Relatable. बट लाइक हाँ these terms get thrown around quite easily Ex- right exactly. So, as a student, it is very important to be very, very open कि ये चीज हो भी सकती है तो और ये चीज नहीं भी हो सकती because if I say I have anxiety it does not mean that I have anxiety disorder. Okay, it's very different. So you have to realize कि if I'm sad I'm not depressed. If I have anxiety it doesn't mean I have the anxiety disorder. So जब आप क्राइटेरियाज पढ़ते हो जब आप पढ़ते हो तो आपको हर चीज वो समझनी पड़ेगी एनालाइज करनी पड़ेगी ऐसे नहीं कि ये भी है ये भी है ये भी है सो विद अ वेरी वेरी ओपन माइंड आपको पढ़ना पड़ेगा बट समटाइम्स आपको लग सकता है कि नहीं ये तो है ही एंड इट इज गोइंग टू मेस अप विथ योर हेड सो यू कैन ऑलवेज गो अप टू योर फैकल्टी और एनी teacher you think is approachable or you can always seek help for that and clarify कि take 2 or 3 sessions to get into it कि है कि नहीं and the person can diagnose you and help you with it.
So वो And चीज़ you can is that a always do. common occurrence in the field? People realizing about their own issues while studying about the issues. Yes, it is. It definitely is. It happens a lot. And मतलब disorders तो I can't say मतलब क्योंकि काफी लोग are not open to it कि ये नहीं नहीं कोई disorder थोड़ी ना होगा. But so it happened with me also. And I think when I was doing my counseling, मतलब when I was studying it, and उस एक साल में a lot of issues were very very relatable. Like every theory we used to read उसमें से कुछ ना कुछ निकल के आ रहा था. So it used to happen a lot. Then we used to go to our supervisors, we used to take up sessions उस पे कि ऐसा है कि हमें ऐसा लग रहा है और अगर ऐसा है तो then where is it coming from? So it happened a lot when you are reading it in that way where you are reading it on a personal basis कि चलो उसको अपने आप से relate कर लो या उसको आप इतने उस चीज को आप इतने अच्छे से समझ रहे हो तो आपको हो सकता है कि है या anything starts coming up or you start relating to a particular theory or a particular part of the theory. And just say if you read about self-esteem, so you will obviously question your own self-esteem, right? कि है नहीं है क्या नहीं है तो क्यों नहीं है, and then you go into the loop where you are doubting yourself and everything. Then you can always go up to, then we used to go up to our supervisors, our counselors, our peer counselors कि भाई ऐसे ऐसे है now now then we'll go back to where it is coming from, how is it coming from. So it does happen a lot, and especially when you're doing it in a practical basis, it happens a lot. So it's all you see, it's always advisable, or it's always good to have a supervisor or a counselor around you, मतलब with you to help you through it, and always approach them. कुछ भी है तो you should always be ready to approach them, वरना फिर it will start messing you up. And as students of psychology, does these terms being thrown around very casually bother you? Like बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि I like to keep my room clean, मेरे को थोड़ा OCD है, या हाँ मतलब मेरे को मेरा मेरा ऐसा यार मैं ये मूवी दोबारा नहीं देख सकता, ऐसा PTSD हो जाता है. सो लाइक वी हाँ वी डू दैट, राइट? हम लोग या हाँ use terms like OCD, PTSD, anxiety, depression in very हाँ at times humorous context, very and at casually. some times very हाँ casually. Yeah, it gets thrown around very much. So ऐसा irritation होता है कैसा feel होता है कि it's a serious disorder and it's हाँ not something to be joked about, or is it something you're like हाँ ये भी एक तरीका है to cope with things? It is very irritating at times, when जब especially जब लोग बोलते हैं कि मुझे रूम क्लीन चाहिए because I have OCD, or so one day you're just not in the mood, or you're just sad and you're like मुझे depression है, I'm very depressed. So obviously it's like यार लोग सब then ऐसा पहले तो ऐसा लगता है then you don't understand what it is, you don't understand the intensity of it, because it's a huge thing. It's actually very serious, and it's not something to just be throwing around. क्योंकि आप नॉर्मली आप अपना आपके आपके क्या हाथ में दर्द कर रहा था थोड़ी ना बोलते हो मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। अब क्या बोलते हो आपके हाथ में दर्द कर रहा है, राइट? तो वो चीज है कि आप ऐसे सिर दर्द को ब्रेन ट्यूमर नहीं बोल सकते, वैसे आप अपने सैडनेस को डिप्रेशन नहीं बोल सकते, बिकॉज इट्स वेरी वेरी सीरियस. So, but then again, coming back to where you have to understand as psychologists also that people are not aware. उनको नहीं पता है कि डिफरेंस क्या होता है. उनको एक टर्म इंट्रोड्यूस करवा दिया गया और एक जनरल मीनिंग इंट्रोड्यूस करवा दी गई, और शायद मीनिंग भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई. उन्होंने एक एग्जांपल देखा कि ओसीडी का मतलब होता है चीजों को साफ रखना, बट इट्स वे बियॉन्ड दैट, इट्स सो बियॉन्ड दैट कि यू नो हल्की सी घबराहट हो गई तो आपको लग रहा है दैट आई हैव एंजाइटी डिसऑर्डर्स और आई एम हैविंग पैनिक अटैक्स. So वो चीज़ है, you have to also understand कि they have seen people using it and now they are using it and they don't know what it is. So वो लोग को नहीं पता वो क्या इंटेंसिटी है, बट यू एज अ साइकोलॉजिस्ट नो कि उनका क्या मतलब है. यू कैन ऑलवेज एजुकेट देम, बट इफ दे आर नॉट रेडी टू गेट एजुकेटेड यू कैन ऑलवेज बी लाइक कि हाँ भाई समझ में आ गया. सो अपनी मेंटल हेल्थ खराब करने का कोई फायदा नहीं है ओवर पीपल हु आर नॉट रेडी टू Hmm. ओपन अप और लाइक ओपन देयर माइंड्स Yeah. एंड मतलब in that case लर्न just अबाउट take it as a joke or at face value and then move on हाँ. type. यस यू कैन ऑलवेज से कि हाँ आई अंडरस्टैंड कि इफ यू सेइंग कि मुझे ओसीडी है तो हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि ठीक है व्हाट यू मीन, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू Yeah. मीन, बट Hmm. यू आर यूजिंग द रॉन्ग टर्म. Hmm. ऐसे. But speaking of that thing, the example is quite interesting. जैसे सर में दर्द है तो ब्रेन ट्यूमर नहीं है. हाँ बट देन अगेन हो सकता है हो भी, मतलब देयर इज दैट पॉसिबिलिटी, हाँ बिकॉज हाँ बहुत बार लोगों को लगता है कि हाँ, अगर
you become too defensive about it as well कि अरे I'm बस ऐसा sad हूँ तो phase है, maybe it's not depression, Hmm. but Hmm. it could be. So Yeah. how does a general person, how would one know, is it actually just Monday blues or something, or is it actually depression, or is it just some tension or anxiety? uh, th- Hmm. so how would one find out? Uh, एक दिन में तो obviously you can't find out. You need days. Like if it's going on for a certain amount of time, just say if you know if I'm sad and it's been going on for a long time, it's been so long and so intense कि अब वो मेरी social, मेरी personal या मेरी मेरे काम में के बीच आ रहा है. It's not letting me work or it's not letting me socialize. I'm not able to get out of bed for like 1 month, 2 months, 3 months. और अब मेरा कोई काम नहीं हो रहा है and everything is put on hold because of that. वहां पे you can understand कि हाँ now it is hampering everything around. So that is मोस्टली ये चीज़ लोगों को नहीं समझ में आती है बिकॉज़ ऑब्वियसली नहीं पता है। ऐसा कुछ Hmm. गलत नहीं है बट आपको पता नहीं है तो आपको कैसे समझ में आएगा या फिर आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो। बट हाँ, इफ इट इज़ गेटिंग हैम्परिंग योर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आल्सो तब वहाँ पे यू कैन से कि नाउ इट मे गो इनटू द डायरेक्शन वो अब डिप्रेशन के उधर जा रहा Could है be या वो something दैट serious that needs to यस be. एग्ज़ैक्टली हाँ, दैट uh, नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड एंड नाउ आई नीड टू सी कि व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली हैपनिंग टू मी। So like the factor is कि it becomes crippling to other parts of your life. I think that is Yes. one of the very important uh, हाँ. indicators. हाँ, एग्ज़ैक्टली सो um, इवन इन लाइक डिसऑर्डर्स व्हेन वी रीड अबाउट डिसऑर्डर्स जो हमारी बुक है डीएसएम उसमें भी देयर इज दिस वन क्राइटेरिया फॉर ऑलमोस्ट ऑल दिस थिंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल डिसऑर्डर्स वेयर इट मेंशन्स दैट इफ इट स्टार्ट्स हैम्परिंग योर सोशल एंड पर्सनल लाइफ सो वो एक क्राइटेरिया इज ऑलवेज देयर। So, as somebody who has struggled through and gotten through anxiety, thankfully, I don't think कि मेरे को anxiety disorder था per se, because my counselor never told me कि okay you have this, मतलब very clearly कि हाँ you have this disorder, right? Um, but I feel कि it like in my case it was obviously crippling for quite a few months. But there is also a fact कि it there is also something called as a healthy amount of nervousness, right? यस। Because that's a natural emotion that we have, like, and but when it goes out of control, that's a problem, right? So how do you distinguish this? Basically, what is anxiety? सो एंजाइटी तो क्या मतलब हिंदी में अगर बोलो तो घबराहट को ही बोलते हैं एंजाइटी एक तरीके से, ठीक है? बट एंग्जायटी डिसऑर्डर फिर अगेन वही चीज़ आ जाती है कि देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया, देयर आर सर्टेन चीज़ें होनी चाहिए कि अगर वो सब फुलफिल हो रही है देन यू हैव अ डिसऑर्डर। बट एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ एंग्जायटी तो हो सकती है, मतलब क्या हो गया कि कुछ चीज़ आपको छोटी-मोटी चीज़ आपको ट्रिगर कर दी और मे बी आई हैव एन इंटरव्यू द नेक्स्ट डे एंड नाउ आई एम एंग्ज़ियस आई एम नर्वस। सो वो चीज़ दैट कम्स इनटू अ हेल्दी पार्ट कि चलो कभी-कभी किसी चीज़ को लेके आपको एंग्जायटी Stage हो रही है, fright, but then it's right? gone. Yeah, but then it's gone. After the interview or before the interview, or it was just there for this one specific hour before it, then it's gone, then it's fine. But then वो persistent है कि अब मेरा वो स्टेज पे जाने से पहले था बट अब स्टेज पे जाने के बाद भी है एंड इट्स देयर, इट्स कंटिन्यूअसली देयर, इट्स it's there in your life, it's very persistently there in your life. That is when it becomes unhealthy कि कुछ भी कर रहे हो, even if sometimes you are doing things you like and still you And are very anxious about it. yeah, and you're not able to enjoy them. Exactly. Yeah, that one So, why is. again, it all comes down to कि is it hampering your other aspects of life as well, है ना? तो that is when it becomes healthy कि अब मेरे दोस्तों से मिलने पे भी एंजाइटी तो अब ये कुछ अनहेल्दी की तरफ जा रहा समझ रहे हो शाश्वत? है। दोस्तों से मिले भी एंग्जाइटी हुई, दोस्त गलत है या डिसऑर्डर है? तो बट ये सब चीज़ें बहुत क्रिपलिंग होती है, मतलब मेरे को तो टर्मिनोलॉजी और ये सब तभी समझ में आया व्हेन आई माई सेल्फ गॉट इनटू काउंसलिंग एंड थेरेपी, एंड मेरे को समझ में आया है कि ओके लाइक ओके पेट में दर्द डज नॉट मीन कि
इनो लेके पॉटी चले जाओ ठीक हो जाएगा, नहीं. हाँ दैट हाँ इज दैट इज समथिंग यू हैव टू वर्क एट फॉर मंथ्स टू हम्म टेक दैट आउट. एंड या तो वो सब होता है, एंड इट बिकम्स वेरी वेरी ट्रिपलिंग, लाइक देर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ indecisiveness, I would indecisiveness, or you're basically not able to function, right? You हम्म decide मन में कि okay, like कल से I will start some workout or something, हम्म but हम्म कल आता है and then you're still not able to do it, right? हम्म And हाँ Bhai, Smriti and I heart relate, bro. by like this thing is so common, yeah, like I think या मतलब it's funny because it's true, right? Like या and but the thing is कि some people say कि हाँ, like I'm a मैं I मेरे एक दोस्त है, वो मेरे को बोलता है मेरे को प्रोक्रेस्टिनेशन में PhD है. I was like bro, are you sure, मतलब ठीक हो, like सब ठीक है. तो obviously procrastination is also a normal process that happens, but या excess of that is going into some deep problems, right? Like, so हम्म what would you say is a uh, do you think, first of all, is there a healthy level of indecisiveness and procrastination? yeah, there is a healthy level. There definitely is कि हाँ चलो एक point तक it is okay to procrastinate. कभी कभी you are just exhausted or burnt out or you just don't want to. It's fine. तो healthy level है. लेकिन हाँ And unhealthy level भी है. unhealthy level तो हाँ. Again, I'll just say the same thing कि भाई I think it's just the same कि अगर फिर वही आपकी लाइफ में वो कैसे आपको इम्पैक्ट कर रहा है even for procrastinating कि if I know there's an exam परसों and I'm still not studying tomorrow also तब वो मुश्किल लगता है then it's going towards unhealthy because I know if I'm not studying tomorrow I'll fail the other day and I know it's an important part it's an important then it's like कि अभी भी क्यों I'm not able to study और when it comes to indecisiveness I'm not able to decide कि कल के उस जॉब इंटरव्यू में जाना है कि नहीं जाना है I'm not going because because of this indecisiveness so now it's hampering my life ना in ways कि मतलब कि भाई अब तो प्रॉब्लम हो रही है अब तो भाई नौकरी नहीं मिलेगी अब क्या होगा and if I want to do the job it's Hmm. different when I don't want to do it so जैसे if sometimes what happens when there's indecisiveness, it helps you to understand that is it something that I want to do or not. जैसे job interview का example है. So if I don't go for an interview, maybe it is also because my indecisive is coming from a place where I don't want to do this, but pressure की वजह से जिस भी reason से I was supposed to do it. Right. तो वहां से भी indecisiveness आता है बट देन अगेन वो चीज भी फिगर आउट करना इट्स नॉट इजी ना सो अनहेल्दी तभी होता है जब चीजें आपके हर चीज में अब हर चीज में घुस रही है अब आपका हर चीज अफेक्ट हो रहा है तब यू कैन ऑलवेज सीक हेल्प यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड वेयर योर इतना ज्यादा हर चीज में आपको कंफ्यूजन है हर चीज में आप इंडिसाइसिव हो रहे हो आप हर चीज में कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई ये करना है नहीं करना है ये क्यों करना है कैसे करना है everything every entire aspect of your life that is when you can always go for help and see where is it coming from because it is definitely coming from a part of you which does Somewhere. not want to do a certain thing or Right. just want to do something है ना तो वो चीज को एनालाइज करना पड़ेगा when it goes towards unhealthy but then again it can be unhealthy for you anytime it depends on person to person जो चीज तुम्हारे लिए unhealthy है वो शायद मेरे लिए ना हो Hmm. so whenever you feel that कि अब ज्यादा हो रहा है that is when you can think कि चलो मतलब कभी कभी you can only feel कि ये ज्यादा हो रहा है now I need to take help or I need to talk to someone so that is Right. when you can do हाँ बट ज़्यादा तो बिना जाने भी हो सकता है, राइट? लाइक हाँ तो उस केस में मैं लाइक सेल्फ एनालिसिस कैसे करें, लाइक डू यू थिंक दैट इज़ पॉसिबल, और डू यू थिंक कि लाइक लोगों से बात करके ये फिगर आउट होता है कि ओके, लाइक अच्छा ठीक है, ये जो हुआ ये ज़्यादा था, लाइक. it is possible and it is not possible like there are both things it again depends from person to person मेरे लिए हो सकता है possible हो सकता है तुम्हारे लिए possible ना हो सो वो दोनों चीजें होती हैं मतलब ऐसा नहीं है कि कभी कभी ज्यादा नहीं होता और हम लोग को लग जाता है कि भाई अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है अब हाँ. तो कुछ करना पड़ेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है इफ यू थिंक कि उसका कुछ करना पड़ेगा तो करो उसका कुछ फिर ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के मत बैठो करो हम्म. तो वही बात है कि इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पर्सन आप नहीं बोल सकते हो कि एक जनरल स्टेटमेंट देना इज नॉट राइट और इज नॉट
ओके, नहीं देना चाहिए जेंडर स्टेटमेंट कि ऐसा होता ही है, कि ऐसा होता नहीं होता। इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी, इट्स ऑलवेज चेंजिंग। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्हिच विल ऑलवेज कम टू प्ले इन दिस, इन एवरी सिचुएशन। every situation is in itself unique, and like उनका हाँ। जो solution होगा या at least जो path to the solution होगा, that is also going to vary widely between person to person and their हम्म। upbringing and stuff like that. हम्म। हाँ, Very एग्जैक्टली। personal and subjective thing basically. हम्म। हाँ। मतलब not doesn't go directly like कि अच्छा ओके तुम्हारा pulse rate इस रेंज को क्रॉस कर गया है या उसके नीचे है तो हम्म। हाँ। इज हाँ। लाइक Yeah, वो दिक्कत है या बीपी तुम्हारा शूट अप करेगा कुछ yeah, तो इसके बहुत ज़्यादा सटल इंडिकेटर्स रहते हैं बायोलॉजिकली एंड बहुत सब्जेक्टिव हम्म। रहता है. it's like कि, oh look तुम्हारा blood blue है, obviously you have a condition, like it's not Yeah. like that. हाँ, it's not like that. There's always individual differences are always playing a role in your life. इसीलिए every situation, every person, इसीलिए everything, everyone is unique, right? क्योंकि वो individual differences वाला factor is always there. Hmm. Sometimes, I mean, correct me if I'm wrong, but Hmm. I recently found out that we tend to think of mental health as something that's more about conditioned by the environment we're in and not something about that's internal to us in a way कि हमारा body बना इस तरीके से इसलिए we're like this है कुछ but I found out recently when there was uh, surge in the mental health awareness area. Hmm. It is also based on hormone secretions and everything Yeah, as yeah. well. Sometimes हाँ. everything is fine and your brain is just not producing enough serotonin for you, and you might Hmm. feel It's right. so. ये ऐसे है. This is hormonal is also a reason कि there are certain disorders, or you think there are certain, you are going through certain things. It's also genetic most of the time. Depression is also genetic. वो भी डिप्रेशन का एक फैक्टर है, एंजाइटी का एक फैक्टर है, ऑल्सो ऑलवेज मतलब जेनेटिक्स भी होता क्या है बात हमेशा। कर रहे हो भाई साहब, did you know this, Abhishek? हाँ मतलब I as a matter of fact did. I had no. Oh God, this is अरे भाई पूरा एक avenue खुल गया है भाई. Shasha is like it's a new world. It all makes sense now. Oh my god. No, but that's true. Okay, Like, okay. environment is only Grant Tanish के साथ बात so big a part of your issue, right? हाँ, देयर इज ऑलवेज इवन क्या होता है, मोस्टली इफ यू सी women menopause में they are very tend to being depressed because of the hormones, right? So this is hormonal, is hormones are also a very important part of your mental health. मतलब वी टेंट अभी जो अवेयरनेस है उसमें होता है कि इट्स ऑलवेज द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे बहुत फोकस होता है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली आई एम नॉट डिसरिगार्डिंग इट, बट आल्सो वी हैव टू समटाइम्स सी कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स है कि नहीं है, या फिर ये The जेनेटिक साइकिल में, physiology बिकॉज can impact your psychology. I was हाँ एग्जैक्टली। actually मैं एक वीडियो देख रहा था YouTube पे recently. Sorry to cut off the discussion यहाँ पे. हम्म। But it was about this psychology professor who was telling his experience with a variety of clients and things like that. And हम्म। he said कि एक client थी उसकी जो कि she complained about not having energy to do anything, हम्म। and they dug into her issues for a month or two, and then he was like okay, like tell me ki, what is your diet. And then हम्म। the client was like okay, I have one rice bowl every day because I want to lose weight. and हम्म। and and the psychologist was like obviously you won't have enough energy to do anything because you're या। literally starving yourself, right? Like that's not how you lose weight. You like एग्जैक्टली। eat healthier if you want to lose weight, or हाँ। just try something else, but have food, dude. Like food is या, even good amount of sleep, that is also very oh important my for your god, mental health. yeah. वी फील कि हम लोग का जो लाइक द आवर लाइफस्टाइल करेंटली इज व्हाट कि हम लोग देर से सोते हैं 4-5 बजे, हम लोग उठते हैं लेट, सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट प्लेज, इसीलिए वी आर ऑलवेज एडवाइज टू हैव गुड स्लीपिंग पैटर्न्स, लाइक नॉट 6 घंटे की नींद का मतलब ये नहीं कि आप दिन में कभी भी सो लो, 6 घंटे की नींद का मतलब है कि 11 बजे सो के 6-7 बजे उठ जाओ, सो
वो भी फैक्टर है. Hmm. फूड इज ऑल्सो अ फैक्टर बिकॉज आपके बॉडी को वो sleep में that body needs that rest, body needs that time to recharge and get up again and start again the next morning. Same with the food, the body needs it, वो body की requirement है. We So this is one thing I don't know if it's off topic or not, but I think it's also very important that we don't listen to our bodies enough because we are so in this race कि हम लोग को ये करना है ये भी करना है ये भी करना है that we don't listen to our bodies. So I feel it is very important to listen to your body what it needs at a certain time. Sometimes your body will require rest, and there are ways that your body is going to tell you कि आज मुझे rest करना है, I need a day off, I can't do it. So that is the time when you need to take back, you need to sit back and you need to take that day off. You need to take a mental health day off. Take it for Hmm. yourself. Same with the food. Sometimes you'll have a craving to eat something sweet. So it's वो craving क्या है? That is your body's way of telling that you need it. वो that is required. वो कम है या फिर वो चाहिए आपकी बॉडी को. So that intense cravings and वो सब these are signals from your body. You have to be very very you have to listen to what your body needs. वरना Hmm. वरना फिर आपकी मेंटल हेल्थ में तो इशू आएगा ना बिकॉज यू नॉट लिसनिंग टू योर सेल्फ एक तरीके से. सो हाउ विल योर थिंग्स synchronize. So I think this is very important, and people should know this that it is very very important to listen to what your body is asking you to do. Because हम लोग को लगता है कि कुछ नहीं है यार, जब देखो तब थकान होती रहती है, बट ऐसी Ah. बात नहीं है. I known people like, okay, like I don't have a very good sleeping pattern, and I'm working on it, but it's like it's funny for me because like मैं ऐसे 2-2 घंटे के ब्रेक्स में सो लेता हूँ कभी कभी, which is not healthy at all. But for some people it becomes a point of pride. They're like कि, okay, like let's have a competition who is sleeping less. I'm like, मतलब Exactly. that's not healthy at all, dude. What are you doing? Yeah, it's not what should be trending. It's not shouldn't be a trend. Yeah, Like if your body is asking for sleep, your body needs that. Because it's your body is like working. आप सोचो ना 24/7 आपका दिमाग काम कर रहा है. Even when you're sleeping, your brain is working. right. So there will be a point where you will be like कि बस बहुत हो गया. And your body will be like कि अब भाई नहीं चला जा रहा है, but I'm still working क्योंकि I have to work. तो वो चीज it's not sometimes it's not even possible to take rest. I get it, but still if जहाँ तक possible है वहां तक you should listen to your हाँ, body. but You you should have to always try give it. is the point, right? Yes, exactly. You can always try. कभी कभी नहीं होता. I get it. Like I especially I've seen my friends who are who are working right now. उनको नहीं मिलता टाइम. उनको ऑफिस अटेंड करना है, कुछ और ऑप्शन नहीं. देन अगेन जो भी टाइम मिल रहा है इट्स नॉट लाइक आप 100% सुन सकते हो, बट जितना हो सके आप उतना तो सुनो ना. वो वाली बात है. And like sleep issues can be very, very complicated also. Like हाँ. recently ही like मेरे को actually sleep problems बहुत समय से हैं, बहुत मतलब I think हम्म, 7-8 साल हो गए होंगे इस point पे कि हम्म, there are some weeks जहाँ पे everything is fine and I'm able to sleep 7 to 8 hours, but then there are some weeks I'm not able to sleep at all. Like मतलब it's like I tire my body enough कि okay, I literally can't walk right now, but I still हाँ. can't sleep, and that requires judgment कि okay, I need help अभी, हम्म, it's not and me and my therapist, we recently worked at it, and I realized हम्म, something that it can come from a very very deep seated belief कि yeah. कॉलेज में जो कल्चर दैट आई फेस्ड वाज एवरीबडी हैज हैड टू लाइक पुश योरसेल्फ हम्म, because that's the culture, right? If you're not pushing हम्म, yourself, you're missing out on that time, and time is valuable, right? Like yeah. कॉलेज में हम्म, ऐसा होता है, and हाँ. वो that like it's a good thing to know to push yourself and क्या कहते हैं to know कि you can do a lot of work. That's very good, but it's also good to know where to stop. And हम्म, I recently discovered कि वो push yourself वाला जो thought था, that actually for some reason got ingrained in my brain, and it turned into the fact कि if I'm sleeping then I'm wasting my time. yeah. वो एक association बन गया है अब, and हम्म, it's just so hard to break. Like उसी दिन कुछ था, like I had to take some medicine in three हम्म, parts with
10 minutes of separation in between them. Okay, so Yeah. and I was obviously having sleep problems, तो मैं उस समय I went to sleep and I remembered कि okay मैंने वो वाला medicine नहीं लिया है तो I have to take it, and for some reason I was happy because Yeah. I found a legit reason that I can throw at people कि okay this is why I didn't sleep. Right, I Hmm. had to take a medicine, so I legit had to wake up for 20 minutes. It's not कि मैंने कोशिश नहीं की सोने की. It's a Hmm. rationalization. I Hmm. hope you're able to understand it. Yeah. Um, Yeah. like a normal person would go to sleep, realize कि okay they have not taken their medicine and be like, oh fuck yeah, like I have to wake up for 20 minutes now. You know, Hmm. but I was like, कि, yes, I have to wake up for 20 minutes because Yeah. that's just I I think a very good explanation would be what kind of medicine was it, man? I mean, I heard I took a medicine and I was very happy, and no, it I'm was just not, I'm unable to get past it. it was like And a cough cold medicine, man. Like, are you sure? yeah, I'm telling you. Acha, oh, So, maybe share that medicine sometime. I'll just, I mean, बट मतलब उस मोमेंट पे एक्चुअली मेरे को फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि वो एसोसिएशन है मेरे मन में एंड Hmm. आई नीड टू बिकॉज दैट्स हाउ दीज थिंग्स वर्क राइट वी आर नॉट इवन Yeah. अवेयर ऑफ देम बट दे आर No. देयर. It is. It's true actually. It's matlab, like you said, na, कि college में there's this thing कि you have to wake up and you have to always be like working. So I think this is very common now. कि I see everyone is waking up till 3 and 4, and even if I'm up the whole day and working the whole day, I still feel कि वो 3-4 बजे तक जग के जो काम होगा ना, वो शायद मेरा 10 बजे तक नहीं हो पाएगा. So I have to wake up with everyone. उनका स्लीप वी फॉरगेट टू सी कि उनका स्लीप शेड्यूल क्या है और हमारा क्या है. सो वो एक हसल कल्चर तो है ही खैर कि करना है, काम करते रहना. The lesser sleep you get, the cooler you are and the more hardworking you are. Yeah, the more hard work, the more ability you have, right? Because you can do it Exactly. without the sleep. Like, that's not, But then it's just not healthy. yeah. यार तो क्लोजिंग थॉट्स में मेरे को एक चीज़ पूछनी थी. Mhm. Like people tend to, I mean, for example, like Abhishek is a software engineer. I've worked as a software engineer. तो ऐसा होता है ना कि when we look at a software or an application, we start to appreciate the nuances of it और think कि अरे यार इसका ये API कितना गंदा बनाया है या algorithm कितना stupid है. Mhm. We will go there कि यार इसका डिज़ाइन कितना बढ़िया है, इसमें प्रोग्रामिंग में इसमें इस चीज़ पर Yeah, ध्यान दिया है. don't तो even get me that, started. yeah, exactly. So that's a very natural thing that happens when we study too much about something, and Mhm. then we try to apply it in real life, and it becomes there. So after studying psychology इतना ज़्यादा, Mhm. like do you constantly without meaning to analyze people, and has that affected relationships in any way that you've had? It's like I used to like this person, but man, this person needs help, and not getting from me. नहीं नहीं, नहीं, him I also, think him also. I think first of all, I have not studied psychology like उतना अभी तक. I'm still doing my masters, and I think there are way बहुत लोगों ने बहुत पढ़ लिया है. But हाँ, it has not affected my relationships as such because I think for me, if nothing, psychology has helped me understand people better, especially when I did counseling and I was there for that 1 year. I think it has helped me understand people. It has helped me understand where some people come from. I think, if anything, they have helped my relationships go in a better direction. But it does happen कि sometimes you are able to see toxic patterns of some people and you're like कि यार इसको ठीक There it कैसे is. करना There it is. है. शाश्वत का नाम नहीं, लेने वाले थे. but nahi, so it's not. So even if I see those toxic patterns, right, it's not because ki I get irritated or something. I genuinely want to help the person, to help them understand, ये जो आप कर रहे हो ना, it's not, it's toxic or it's not good for you. And but then again, I see where they are coming from because I have also been in some sort of toxic pattern myself, and I may still be in one which I'm not aware about. सो आई थिंक वो एक चीज वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है आपके अंदर इफ यू डू इट इन अ मतलब ढंग से करते हो तो.
कि you have that understanding कि you get it कि that person is coming from somewhere and then आपके अंदर वो चीज आ जाती है to patiently tackle it to know कि this is not the right time to point out. See, if I go up to you and say कि ये pattern तुम्हारा toxic है, it will change my relationship with you because you'll be like यार क्या बंद क्या पागल है क्यों ऐसे बोल रहे हो ना वो लगेगा दिमाग में कि क्या बोल रही है क्यों बोल रही है कभी कभी दिमाग में आता है शी डजंट लाइक मी शी जस्ट इज जेलस ऑफ मी बट ऐसा नहीं है इट्स जस्ट यू हैव टू बी वेरी व्हेन यू स्टडी दिस यू नो कि मतलब हाँ अभी इट्स नॉट द राइट टाइम टू गो अप टू द पर्सन एंड से दिस तो वो एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है वो एक पेशेंस आ जाता है वो एक तरीका आ जाता है टू handle situation sometimes the person just needs to rant so you just have to let them rant you cannot उस समय यू कांट गो इन एंड से कि यार ये जो तुम कर रहे हो ना ये गलत है भाई ये नहीं करना so that is for me it if anything it has helped me with my relationships and friendships and so yeah I think कांस्टेंट प्रोफाइलिंग चलता रहता है कि ओके ओके ये इंसान चावल हाथ से खाता है और ये इंसान चौथा स्पून और फोक से खाता है ओके दिस पर्सन लाइक्स टू स्लीप ऑन अ पर्टिकुलर साइड ऑफ द बेड ओनली एक ऐसा प्रोफाइलिंग चलता रहता है क्या फॉर पीपल अराउंड नहीं यू नहीं ए नहीं I think I ए told ना कम ऑन पहले सच बताओ ना नहीं सच I told you ना कि you learn to keep your personal and your profession like the personal professionally and personally very different because if I keep on analyzing people तो क्या ही होगा मेरा फिर पता नहीं हाँ भाई डिड तुम यू तो कुछ नहीं एनालाइज हो अस थ्रूआउट द पॉडकास्ट no I did not that is what आर I'm वी नॉट saying that इंटरेस्टिंग इनफ फॉर यू yeah, व्हाट इज दिस I think no, it's see, I have that is what I'm saying, that I've learned to keep it, different. कि अलग-अलग रखना, I have learned it. It's in कभी-कभी बीच-बीच में आ जाता है, I'm not going to lie, but हाँ, ये होता ये है. बोला But We but get but it, we then get it. again, but there again, I know कि I know like I'm aware कि हाँ अभी ये चीज ना इस मेरे बातों के बीच में आ गया so I know when to take a step back to not let my professional life hamper my personal or my personal to hamper my profession so वो चीज ऐसे यार नहीं ऐसे कैसे भी यार ह्यूमंस ऐसे तो होगा ही ना कि कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में आएगा but हाँ I know when to take a step back or एग्जैक्टली when to take a step हैज टू forward राइट yeah, it does. But then what how it helps you is कि इस इन सब के बाद भी you will have a rational frame of mind to understand, to take a step back, to analyze what like to understand what is happening, think rationally and not emotionally, and sometimes emotionally, not rationally. So वो it is आप बैलेंस करना सीख जाते हो या फिर आप टाइमिंग सीख जाते हो कि कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. And you separate two parts of your life. It is very important to separate because ना आप constantly लोगों को analyze कर सकते हो because then it is going to take a toll on you. And ना ही आप constantly अपने clients को emotionally या फिर उनकी उनसे इतना ज़्यादा attach हो सकते हो कि वो फिर आपकी दोस्ती या किसी उसमें किसी और ही dynamics में चला जाए. So in both the cases you have to know where to take a step back, where you have to understand and ये सब चीज़ें होती है which only comes from training and that 1-2 साल का continuous practice. या वो सब तो बहुत अच्छा है but चलो so okay you and I have known each other for like years now Hmm. and I don't think I would be able to handle an analysis from you of myself but Abhishek is a fresh interaction for you what would you Yes, what would you say psychoanalyze you me. know about him I can't. from this How will I? experience ऐसा कुछ एनालिसिस दो ना कि लाइक प्रोबेबली साथ ऐसा कुछ हुआ था या कुछ ऐसा कुछ कूल कुछ सेंसेशनल कुछ कूल कुछ दो ना यार व्हाट इज Kuch जोक्स बहुत लेम sensational. हैं इसके. Kuch, हाँ I no, I can't. interpreting humor as a coping mechanism nice okay like Yeah, stuff like that come on what is this okay you I wouldn't do it for free huh is that it that may be a reason. That can be a reason. That's actually a But very no, good I reason. can't. if you're good I at mean, I something never do it for free yeah, I agree with it. If I'm good at it, I'm not going to do it for free. But also, I can't analyze ऐसे. But ठीक है. I'm not you going to do can't it for tell things like what am I thinking right now and stuff like that No, no, I hey can't. what Oh is my God, this Shahzad, यार इस पूरे 1.5 घंटे के भाई सेशन में आप गलत ये बात गेस्ट को तो बुला बोल लिया रहे हम हो लोगों ना ने I भाई क्या है ये
तो तुमको ना किसी ऐसे को बुलाना चाहिए था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना चाहिए था हु आर गिविंग काउंसलिंग, वो एनालाइज जरूर कर लेते। हाँ वो बोलता तुमने है चलो ठीक है, वो अगला गेस्ट तुमने एक भाई अभिषेक। तुम्हारा वैलिड इसमें। तुमने चलो एक वैलिड डिग्री वाले को बुला लिया है, गलती कर दी है तुमने। भाई, नाइस। ये पॉइंट नहीं है भाई, अब तो ये सब व्हाट इज दिस यार, ये मैं भाई स्कैम हो गया मेरे साथ भाई, मेरे को क्यों बुलाया इधर, मेरे को लगा था अभी कुछ होगा यार, ऐसा जादू वादू। अभिषेक के मोटिवेशनल पेज वाले को बुला लो, हो जाएगा, you'll get everything you want। एक सेकंड, कौन सा मोट, ओ वो वाला। नाइस। मैं तो मतलब ठीक है, वो ये थोड़ा आएगा एडवांस। बोलेगा अभिषेक शाश्वत, ये एक अनफनी है, एक थोड़ा ज़्यादा बोलता है, बट लाइक कोई तो I'm hoping you're the unfunny one because I can tolerate being called talkative, but I need to be funny. I can't Shashwat not needs be to have funny. his coping mechanism with it। See, see, Well, see, 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 see. ये- एक- भाई एकदम सब दोगलापन है भाई, देखो अभी I इसने एनालाइज किया, इसने जस्ट किया, इसने जस्ट किया भाई। I ये I have भाई ये known you for too साइकोलॉजिस्ट लोगों से long दोस्ती नहीं to करनी not चाहिए भाई। it I have भाई known you for too long to not say anything। I'm sorry, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। it's a मैं ये bug, एक्चुअली it's a हिम्मत bug when she wants it to be a bug, है। it's a feature when she wants it to be a feature. भाई एग्जैक्टली। इतना 20 मिनट तक जो इसने बोला है ना कि you need to take a step back, it gets too much। भाई ये है सच, ठीक है, वही। मेच्योरिटी वगैरह सब ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब वही करते हैं भाई, देखो। Yeah, because at the end of the day, I know you too well. Okay, I know you too well to not say anything and leave. Okay, it won't be fair to you and to Abhishek also. So yeah, had to say something now। मुझे मिलना था, मैंने दोगलापन प्रूफ कर दिया, बाकी हो गया भाई। आई वुड से दिस वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्ट्रॉन्ग टॉक एपिसोड। Yeah, I really liked the entire discussion. I feel कि we got through the main point, which is to get your perspective on the mental health problem that we are facing currently, and hmm. that was, I think, बहुत बहुत अच्छा लगा, अच्छा मज़ा आया मेरे को तो। Yeah, I एनी tried। क्लोजिंग I'm not थॉट्स फ्रॉम sure यू? from me। या I don't know। I just hope that I was not very controversial, but also I hope कि भाई, there बट is बिना क्या। कंट्रोवर्सी के मजा क्या है यार। But I genuinely hope that you guys liked it, liked कुछ नया सीखने को मिला या कुछ नया समझ में आया। तो हाँ if ऐसा कुछ भी हुआ, so I'm just glad कि हुआ। So yeah, and thank you for having me। I did not expect कि हम इतनी देर तक बोल सकते हैं so on this topic। I नहीं just thought that I'm very very underqualified for it, but yes, Shashwat believed in me for some reason। So yeah, yeah, thank you for joining so us. guys, it was not just the counselor who provoked thoughts in us, but also us who provoked thoughts in the counselor. true, I I agree। guess, I guess on that note, we We can wrap can, it up. yeah, let's stop.